in this. हाँ, विजयनगर टेम्पल. कल हमने देखा था कि दैट वॉल्स, बाउंड्री वॉल्स, यहाँ पे बाउंड्री वॉल्स हुआ करती थी साउथ टेम्पल्स में, जो नगर टेम्पल्स में नहीं होती थी. इनमें एक, उसमें भी एक चेंज थी दैट इनके वॉल्स बहुत ही हाई होते थे. नॉर्मल जो हाइट होती है 9 या 10 फीट, इनकी नॉर्मल हाइट नहीं होती थी. जो इनके बाउंड्री वॉल्स होते थे ये काफ़ी हाइट में ज़्यादा होते थे. एंड इन फैक्ट इन वॉल्स पे इमेज ऑफ सुपर नेचुरल हॉर्सेस बनाते थे. जैसे हमारे मजहब में भी एक सुपर नेचुरल हॉर्स है विच इज़ नेम्ड एज बुराक. एक सुपर नेचुरल हॉर्स है जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से. आपने जो भी हम जो रिलीजियस टीचिंग्स है उसमें हम सुनते आ रहे हैं. तो इनके यहाँ भी सुपर नेचुरल हॉर्सेस है. उनकी इमेज बनाते इन वॉल्स पे जो काफ़ी हाइट में ज़्यादा होती थी. ठीक है, तो आप लिखिए इसमें. They created very high enclosure walls. They created very high enclosure walls. Very high enclosure walls around temples. Around temples. And on these high walls, images of supernatural horses, were created. Images of supernatural horses were created. Next लिखिए. They introduced second Garbhagriha. They introduced second Garbhagriha, which was known as Amman Shrine. Which was known as Amman Shrine. Amman Shrine, and which was dedicated to chief wife, of main god. Which was dedicated to chief wife of main god. Chief wife of main god. Next देखिए. They introduced Kalyan Mantapam. Inside the premise of temples. Kalyan Mantapams inside the premise of temples. Inside the premise of temples for marriage. For marriage. The first example of such temple of Vijayanagar Empire is Virupaksha temple, which is at a place named as Hampi. Hampi was the capital of Vijayanagar Empire. We have discussed these things. It's in the modern state of Karnataka. There's a place Hampi which was the capital of Vijayanagar Empire. So at the same place, the capital of the Vijayanagar Empire, the Hampi, the temple of Virupaksha, this Virupaksha is there, which has the same design as the Vijayanagar temples were being created. Okay, which acts as a sub-style for the Dravida temples. I'm saying here that जो भी हम ये features यहाँ पे discuss कर रहे हैं, ये addition है. जो हमने द्रविड़ा का देखा था बेसिक स्ट्रक्चर, वो सब इसमें थे. ये जो हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं, ये सब एडिशंस थे, तब ये सब स्टाइल्स बन गए, सब स्टाइल्स ऑफ द्रविड़ा. जो बाकी फर्स्ट गर्भगृह या हमने देखा था नर्थ मंडप, अर्ध मंडप थे, अंतराल देखा था, द्वारपाल देखे थे, विमान देखा था, ये सब चीज़ें थे इन मंदिरों में. बस दीज वर द एडिशंस व्हिच वी आर एडिंग एज वी आर क्रिएटिंग द सब स्टाइल्स ऑफ द्रविड़ा टेम्पल्स. समझ गए. सेकंड एग्जांपल इज वीरभद्र टेम्पल. Veerbhadra temple at a place named as Lipakshi. Lipakshi is a place in the modern state of Andhra Pradesh.
ये दोनों लिखे आपने. So this was all about the Vijayanagar temple. But we discussed here that they introduced some new things in the temples. First was that their walls were very high and the images of supernatural horses are there on the walls of the Vijayanagar temple. Second, we saw that there was addition of second Garbhagriha, which was for the purpose of the chief wife of this main god. Third thing, we saw that what they added in their temples was the Kalyan Mandapam, which was this purely for the basis of marriage. For the purpose of marriage, this mandap was introduced into the temples of Vijayanagar. So next sub style is दोनों sides से supernatural horses. So next is नायक टेम्पल. नायक टेम्पल, नायक किसे कहते हैं? हीरो. वो तो आप मूवी के बेसिस पे मुझे बता रहे हो. नायक का लिटरल मीनिंग क्या होता है? ऑफिसर. इट इज दी ऑफिसर. जो ऑफिसर्स हुआ करते थे तमिलनाडु में, जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको देते थे टाइटल नायक. समझ के आप? तो वहाँ पे नायक रूलर्स थे. वो पहले ऑफिसर्स हुआ करते थे पांड्यन किंगडम के, उसके बाद वो रूलर्स बन गए वहाँ पे, तो उनको बोलते ही थे फिर नायक रूलर्स, who were actually the officers of the kingdom. So they were the persons who actually created the Nayak temples. So there was some, you can say, more additions in the temple which created the substyle of Dravida. So जो भी इससे पहले हमने देखे दिस जो विजयनगर टेम्पल थे उसमें जो भी चीज़ें ऐड हो गई थी इनने वो सब कंटिन्यू की. एक तो बेसिक स्ट्रक्चर द्रविड़ा का जो हमने देखा, द्रविड़ा टेम्पल कैसा है, उसके बाद सेकंड गर्भगृह, अमान श्राइन एंड कल्याण मंटपम, ये इन्होंने भी रखे थे. बट दे एडिड दैट, दे एडिड दी, यू कैन से मोर देन 10 गेटवेज. आप समझ के गेटवेज कितने? 10 गेट से काफ़ी ज़्यादा होते, मतलब यू कैन से 13, 14, 15 गेट्स वे देयर. सो यू कैन से दैट दीज टेम्पल्स आर नोटेड फॉर वेरी, यू कैन से दैट वेरी लार्ज नंबर ऑफ गेटवेज और गोपुरम्स विच आर देयर. एंड जो कॉरिडोर्स इनके होते थे टेम्पल्स के, वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते थे. इसके जो पहले टेम्पल्स आए थे द्रविड़ा में, उनके कॉरिडोर्स उतने लॉन्ग नहीं होते थे, बट दे क्रिएटेड दी लॉन्ग कॉरिडोर्स इनटू देयर टेम्पल्स एंड दोज कॉरिडोर्स वर टर्म्ड एज पराक्रम. ये पहले भी हमने इससे पहले डिस्कस किया, बट इट वॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर टैंक. जो बाहर होती थी मंदिरों के बाहर, पराक्रम और वाटर टैंक. तो यहाँ पे पराक्रमी किसको बोलते थे? टू दी लॉन्ग कॉरिडोर्स विच वर बीइंग क्रिएटेड इनसाइड दी नायक temples. That was the only addition on the side of this Nayak rulers of Tamil Nadu. That what they did, that what was that addition from their side, that was the large number of gateways were there and the corridors became too long, that were termed as parakrams. समझ का? लिखिए इसमें. And one more thing, that पराक्रम जो था वाटर टैंक था नॉर्थ में या साउथ में ही, बट इनने पराक्रम को लॉन्ग कॉरिडोर को बोला. हाँ जी, पुष्करम था वो. सॉरी, पुष्करम वाज दैट. हाँ, पुष्करम था वाटर टैंक, पराक्रम आर द लॉन्ग कॉरिडोर्स. सो जो पुष्करम था, इससे पहले जो हमने बनाए थे जिस साउदर्न टेम्पल्स में, वो कहाँ पे बनाए थे? उसकी लोकेशन कहाँ थी? लोकेशन कहाँ थी उसकी? नॉट डायरेक्शन, मतलब कहाँ पे हमने जो वो पूरा बनाया, बाहर या अंदर? कॉर्नर पे, यानी कि बाहर वाले. अब मैंने वहाँ पे इसलिए वो कट किया था क्योंकि जगह नहीं थी. इट्स एक्चुअली ऑन द आउटसाइड. किसी ने अगर वैसा बनाया तो प्लीज करेक्ट दैट थिंग. इट्स नॉट ऑन द इनसाइड. या ऐसा नहीं था कि आधा अंदर था आधा बाहर था. यहाँ पे जगह नहीं बची थी तब. हाँ, बाउंड्री वॉल के बाहर रखो इसको. सबने वैसे ही बनाया. बाहर निकालो इसको. तो यहाँ पे चेंज क्या थी इसी वाटर टैंक के साथ? यही वाटर टैंक जो बाहर होता था, इन्होंने वो अंदर रखा. Inside the boundary wall, that was the other change in the Nayak temple, that they created those pushkarams inside the premise of the temple, not outside the premise of that temple. ठीक है? तो ये mention in this. These temples were developed by Nayak rulers of Madurai. Nayak rulers of Madurai. जो कहाँ पे? तमिलनाडु. Nayak rulers of Madurai.
Next, okay, they continued the concept of a man shrine, as well as two garbhagrihas. A man shrine as well as two garbhagrihas. Next, okay, these temples are noted for presence of large number of gateways. For gateways के ऊपर क्या होता है? Vimana. I mentioned in the Dravida style जितने भी gateways थे उन सब gateways पे क्या थे? Vimanas. Large number of gateways and multiple vimanas. And multiple vimanas. Next, okay. These temples are also known for huge corridors, which were called as parakarams. Next, okay, they created the water tank. They created the water tank inside the premise of temples. First example for such temple is Meenakshi temple, which is at Madurai, Tamil Nadu. Second is Sri Ranganathan Swami temple of Srirangam, Tamil Nadu. Srirangam is the name of a place in the modern state of Tamil Nadu. There's a temple, Sri Ranganathan Swami temple, which is an example of Nayaka temple. Of Srirangam, Tamil Nadu. Srirangam of Tamil Nadu. ये थे सब स्टाइल्स ऑफ द्रविड़ा टेम्पल्स. कुछ और टेम्पल्स भी है जो किसी के सब स्टाइल्स नहीं है, विच वर एक्टिंग एज अ सेपरेट टेम्पल्स, यानी कि वो डिफरेंट रूलर्स ने क्रिएट किए थे एंड दे वर हैविंग द मिक्स्ड फीचर्स ऑफ दी, चाहे वो नगरा थे, द्रविड़ा थे, मिक्स्ड फीचर्स हुआ करते थे इनमें. ये कौन से टेम्पल थे? सो यू हेडिंग एज द अदर टेम्पल स्टाइल्स, यू हेडिंग एज अदर टेम्पल स्टाइल्स. Vesara temples. Vesara temples. वेसारा टेम्पल जो थे ये किन्होंने बनाए थे?
आपको याद होगा चालुक्यास, चालुक्य रूलर्स, बादामी, this Vatapi Chalukyas, Badami Chalukyas, different branches of this Chalukyas the. Those Chalukya rulers, they were the rulers of Karnataka. They created the Visara temples. Visara actually is a word which is derived from a Sanskrit word which is Vishra, which means taking a long path. विश्व वर्ड जो संस्कृत वर्ड है which means taking a long path, उसी से इंस्पायर हो गया विसारा temples, which means that to reach to the God we have to take the long path. हमें बहुत कुछ देखना है and we have to perform a lot of things. After that we can attain that salvation. After that we can attain that path of the God which leads to the God. समझ गए? अब तभी इसका नाम ही पड़ा विसारा temples which are created by Chalukya rulers of Karnataka. Chalukya rulers. So what was there in these temples? That they created these temples by the mixture of three things. First was the Nagara style of temple, कुछ वहाँ से लिया. Second temples कौन थे? Dravinda style के temples, कुछ वहाँ से लिया. और कुछ लिया जो semi circular halls थे, Buddhist चैत्यास, जो चैत्यास थे, वो किस लिए थे? चैत्यास किस लिए थे? For the purpose of worship. Viharas were for the purpose of rest in the monsoon season. Chaityas were for the purpose of worship. तो वहाँ से कुछ इंस्पायर हो गया था. You can say that these temples are the mixture of three different structures: Nagara style of temple, Dravida style of temple, as well as the you can say Buddhist structures. हम फिर देखेंगे क्या उससे इंस्पायर था. That was a semi-circular halls जो बनाते थे Buddhist, and the Chaitya, this caves, वो क्या होते थे? Semi-circular होते थे. वही डिजाइन किन्ने अपनाया विसारा temples में. ठीक है, तो आप लिखिए Chalukya rulers of Karnataka. Chalukya rulers of Karnataka. Chalukya rulers of Karnataka created this style of temples. Created this style of temples. Created this style of temples. Next, okay. Word Visara is derived from a Sanskrit word. Word Visara. Word Visara is derived from a Sanskrit word Vishra. Vishra, which means taking a long path. Which means taking a long path. Taking a long path. Next, okay. Visara temples are considered as Visara temples are considered as mixture of Nagara, comma Dravida, Nagara, comma Dravida and Buddhist structures. Nagara, comma Dravida and Buddhist structures. So when I termed it that different things were inspired from different structures. For example, I mentioned that Nagara से भी कुछ inspired था. We have seen that ambulatory passageway. क्या वो द्रविड़ा में था? Ambulatory passageway, बीच में गर्भगृह, जो हमने देखा था, द्रविड़ा में ऐसा नहीं था. तो जिस ambulatory passageway was inspired from the Nagara. इनके temples में ये passageway होता था. कौन से? विसारा temples में. So from Nagara style of temples, ambulatory passageway was inspired. And from the Dravida, you can say that what was inspired from that? Vimanas. विमानास किसके थे? द्रविड़ा के. तो ये अपने मंदिरों पे क्या बनाते थे? विमानास दैट वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द द्रविड़ा टेम्पल्स. एंड जो ये सेमी सर्कुलर हॉल्स क्रिएट करते थे टेम्पल के साइड में, दैट वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द बुद्धिस्ट चैत्यास. जो चैत्या केव्स होते थे वो क्या होते थे? सेमी सर्कुलर इन शेप होते थे. वो वहीं से इंस्पायर हो गया था. एंड दे ऑल्सो यूज टू क्रिएट द हॉल्स ऑफ सेमी सर्कुलर शेप. सो दैट इज वाई वी टर्म दैट दीज टेम्पल्स आर मिक्सचर ऑफ नगरा, द्रविड़ा एज वेल एज बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स. सो आप नेक्स्ट लिखिए. Next point लिखे. Ambulatory passageway was inspired from ambulatory passageway was inspired from Nagara style of temples. Was inspired from Nagara style of temples.
नेक्स्ट लिखिए विमाना ऑफ विसारा. विमाना ऑफ विसारा टेम्पल्स. Vimana of Visara temples was inspired from Dravida. Vimana of Visara temples was inspired from Dravida. Third, लिखिए semicircular halls. Third, लिखिए semicircular halls were inspired from Buddhist chaityas. Semicircular halls were inspired from Buddhist chaityas. First example is Durga temple, second is Ladkhan temple. ये दोनों है कहाँ पे? At a place known as Aihole, Karnataka. These are the two famous examples of Visara temples. एग्जाम्पल्स देखे आपने. जो नेक्स्ट स्टाइल था ये कौन सा था? हॉयसला टेम्पल्स. हॉयसला टेम्पल्स. हॉयसला टेम्पल्स क्या थे? ये भी कर्नाटका के ही टेम्पल्स थे. दे वर क्रिएटेड बाय हॉयसला रूलर्स ऑफ कर्नाटका. एक सेक्शन ऑफ रूलर्स था, वे वर टर्म्ड एज हॉयसला रूलर्स. They created this style of temples which got the separate name of Hoysala temples under the name of, there you can say, that ruling dynasty. So what happened in these temples, first the different thing in these temples was their ground plan. Till now we have seen single ground plan, that was a crucified ground plan. So what they created a ground plan which was there in the shape of star. This was the ground plan of Hoysala temples, and this ground plan which was in the shape of star, it is termed as स्टैटिएट. स्टैटिएट ग्राउंड प्लान कहते हैं इसको, जो स्टार शेप में है. ये किसने शुरू किया था? हॉयसला रूलर्स. एंड व्हाट दे इंट्रोड्यूस दैट, वी नो दैट गर्भगृह के ऊपर क्या होता था? विमाना, या तो नॉर्थ में क्या था? शिखर, टावर दोनों के ऊपर था. यहाँ पे जो ये टेम्पल्स हुआ करते थे हॉयसलास, ये गर्भगृह के ऊपर कोई टावर नहीं बनाते थे. ये विमानास क्रिएट नहीं करते थे, लेकिन ये विमानास कहाँ पे क्रिएट करते थे? गेटवेज पे. हमने देखा था द्रविड़ा में गेटवेज पे था. गेटवेज पे वैसे ही विमानास बनते गए, बट गर्भगृह पे इनने विमानास नहीं बनाए. दैट वाज अ चेंज इन द हॉयसला temples. And what they did, that they only used the black or grey color sandstone for the construction of temples. Black and grey color sandstones. That was the, you can say, that different features of the Hoysala temples, that they used a material which was different from the other temples. बाकी temples जो material red sandstone या बाकी जो भी color होते थे वो use करते थे वो, but they only use black and grey sandstone in the construction of the temples. In fact जो carvings हुआ करती थी walls पे वो बहुत ही lavish हुआ करती थी किन पे? Hoysala temples पे. जो इससे पहले temples थे, चाहे वो हमने देखा विसारा या बाकी द्रविड़ के सब styles, they were not very much familiar about the carving या wall पे carving करना या different जगहों पे carving करना. But जो ये Hoysala rulers थे, they had that, you can say, high level this wall carvings on the walls of the temples as well as the boundary walls होते थे, इन पे भी काफ़ी high level या lavish carvings करते थे. समझ गए आप? लिखिए इसमें. Staliate, not statiate, staliate. Staliate ground plan. तो अब लिखिए इसमें, it was developed by, these temples were developed by, these temples were developed by, these temples were developed by Hoysala rulers of Karnataka. Hoysala rulers of Karnataka. Hoysala rulers of Karnataka. Next लिखिए, these temples are noted for
These temples are noted for a very unique ground plan, noted for a very unique ground plan, a very unique ground plan, in star shape, ground plan in star shape, which is known as stellate ground plan, which is known as stellate ground plan. Stellate ground plan. Ground plan. Next, okay. Generally, Vimanas were not created. Generally, Vimanas were not created on Garbhagriha. Generally, Vimanas were not created on Garbhagriha. But it was created on gateways. But it was created on gateways. On gateways. Next, okay. Dark grey or black color stone. Dark grey or black color stone was used in Hoysala temples.